Ministers, members of parliament, ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, Mr. Prime Minister, thank you very much for traveling from Delhi to welcome myself and my delegation here in Mumbai and being present for this session. Our discussion today, your presence here, means a lot and speaks to the long-standing friendship between our two countries and our personal friendship. Thank you very much for that. Mumbai, the city of dreams, a city in perpetual motion, reaching towards the future. I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India-France Year of Innovation. But before I talk about the future, let me start with a fact about the present, not to be underestimated. The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Nair from Kolhapur, right here in this state. So, and if I would add to that, 3 months ago, Mathieu Blasi, Chanel's new creative director, chose a young woman from Hyderabad, Bhavita Mandava, to open his show in New York. And she was the first Indian model ever to open a Chanel runway. She was discovered on the subway platform, and she walked into a subway station in front of the world. So India does not just participate to global innovation. India leads it, from Silicon Valley to the Champs-Élysées, and from technology to culture. And that, dear Narendra, dear Prime Minister, is what this year of innovation celebrates. Not a promise, but a reality. Innovation is a driver of our economic growth. As highlighted by the French Nobel Prize laureate Philippe Aghion, innovation is also what enables us to address the great challenges of our time, from climate change to inequalities. And that is why we created the France 2030 plan to invest more than 50 billion euro in tomorrow's sectors, creating thousands of projects and almost 200,000 jobs. And I'm very proud here to have a unique French delegation with all the possible sectors, and from transport, port business, cement, to AI. I mean, all the different sectors, energy, infrastructure, are covered here with a lot of innovative people. But innovation is never stronger than when it's shared. And India knows this better than anyone. During COVID in 2021, India ran the largest vaccination campaign in world history. 25 million doses administered in a single day, reaching 1 billion doses in just 9 months. And true to this philosophy, India built CoWIN, an open source digital platform, and offered it to 142 countries so they could do the same. To make science a lever for progress, France and India have been working hand in hand for years, and we've reinforced our technological sovereignty while supporting our national industries. And our partnership is strong, and it relies on countless joint projects. In the field of defense, France is a steadfast partner of Make in India. Our high-level cooperation allows us to develop next-generation engines, multi-role helicopters, advanced combat aircraft, submarines, etc., etc. And I want to thank you warmly for the extraordinary confidence you've placed in this partnership. And this is not just a defense contract, and a series of defense contracts. We speak about what a sovereign alliance is. Two great nations choosing each other on land, at sea, and in the sky, not by default, but by conviction. And our cooperation is also crucial in the space sector. The development of the Trishna satellite shows what we can achieve when scientific excellence and industrial expertise are brought together.
Thanks to this innovation, we will be able to better monitor and understand climate change. And we do want to do much more in these sectors, defense, space, because especially space is a great sector in order to better understand our planet, to better monitor, obviously, communications, our defense activities and our sovereignty, but a better understanding of climate change. And I want to compliment here our scientists, labs and so on, working closely together in these sectors, especially when some others are withdrawing their efforts. Addressing climate change also means transforming the way we produce energy. France is supporting India's ambition to expand its access to decarbonized energy through large power reactors as well as small modular reactors. This year, we will develop a series of very important projects in this field. We launched 8 years ago together the Solar Alliance initiative, working very well, by the way. We have a lot of civilian nuclear initiatives here in the country. We will develop this year, Airbus will develop a demonstrator for the production of sustainable aviation fuel, helping to accelerate the decarbonization of air transport in India. And I could mention a series of different initiatives like this one to illustrate the strengths and the depths of this partnership. Our partnership is also guided by a shared conviction that innovation is not just about major technological breakthrough, but also about the common good, about improving everyday life, about making it healthier and safer. This is the ambition behind initiatives such as the Farm to Plate project, led by the French Institute in Pondichéry with the Villavet Group. It will make it possible to track agricultural products at every stage and ensure their quality and protect consumers. And let me also emphasize that innovation requires investing in the education and training of our people, if I mention common good. The launch of the franco-indienne campus for aeronautics is a beautiful opportunity for our countries to develop unique expertise. But this is based as well on a very strong partnership on education and research. And as we celebrate the 40th anniversary of the Indo-French Center for the Promotion of Advanced Research, I believe we also have a valuable opportunity to deepen our scientific and academic ties, which we will certainly discuss tomorrow in Delhi. In Delhi, I will also meet artists and entrepreneurs to discuss another key aspect of our cooperation, which brings our countries closer, culture. French and Indian professionals are already working together to imagine new experiences for the future National Museum in Delhi and the Lothal Maritime Complex in Gujarat. And through Villa Swagatam, and soon our partnership with the Serendipity Foundation to the Arts, we will create new opportunities for artists to connect and create. I spent time with musicians, actors, producers today. I will spend time tomorrow with key players of our cultural links. And I can tell you that we have a series of unique opportunities to create value together, but to convey as well our stories to the rest of the world and advocate for a certain vision of this world based on cooperation and mutual respect. Across all the sectors I mentioned, from defense to space, from health to culture, artificial intelligence plays a central role, enabling us to push the boundaries of innovation. AI holds the promise of improving pandemic prediction, transforming agriculture, opening new possibilities for artistic creations. In a few moments, an AI-generated work will be projected into the gateway of India as part of a production by the Grand Palais Immersif, a leading French institution in digital content and innovative immersive experiences. And this is just one of the many examples of AI's potential, a potential that France and India are determined to explore, but not without safeguards, not without carefully considering its consequences, to respect artists, to respect our children and teenagers, and to protect our democracies.
This is the path we are striving to create together. An AI that is powerful, profitable, but also safe, inclusive, secure, and democratic. With this ambition, dear Narendra, we co-chaired the AI Action Summit in Paris last year and established a framework for our bilateral cooperation in these technologies, the Indo-French Roadmap for AI. And I'm confident that the AI Impact Summit, in which I will be taking part in 2 days' time, will allow us to continue moving forward together toward a better use of artificial intelligence. Let me conclude by here sharing 3 ambitions for 2026. First, to better connect our ecosystems in order to make life easier for researchers, entrepreneurs, students, investors who are willing to develop partnerships. Second, to multiply concrete projects that help us tackle the challenges of our time: climate, health, food security, clean mobility. Finally, we must ensure that this momentum continues well beyond 2026. And this is our common ambition. We must make this year of innovation the starting point for an unprecedented level of integration between our 2 knowledge-based economies. And it is speaking from aerospace, space defense, agriculture, health, sustainable economy, and creative and cultural industries. We can cover a lot of them. To achieve these objectives, we need concrete tools, and the Indo-French Innovation Network, presented a few minutes ago, and launched today as part of this year, is specifically designed to be a constructive bridge between our 2 innovation ecosystems. I hope that all of you will find inspiration and enthusiasm for new projects that will bring progress and prosperity to our 2 nations and beyond. It is no coincidence that the spirit of innovation is at the core of our respective presidency, your presidency of the BRICS and the French presidency of the G7. Innovation is a value we hold dear, one that we champion in multilateral forums, convinced that it is by forging new ties and joining our strengths that we can shape the solutions to the challenges of the century. And this is why, following your proposal, Mr. Prime Minister, we will have this Innovation Day the day before the G7 together, led by a franco-indienne initiative with a lot of students and researchers that we will bring together. I started with the names of those who led and lead global innovation today. Many of them were born here in India. The question is no longer whether India innovates. The question is, who will innovate with India? And France is the unique clear answer. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai-ho, as we say in a famous movie. So long live the Indo-French relationship. Thank you very much. Thank you, sir. बहुत-बहुत धन्यवाद. I would like to now request अब मैं Honorable Prime Minister to deliver his je vais address. maintenant demander Honorable Prime Minister will be à leading notre Premier ministre de Hindi. bien vouloir Members in the faire audience, son discours. Il va parler en hindi, donc les personnes qui sont ici, vous pouvez utiliser vos écouteurs pour écouter la traduction en français. Your Excellency, Excellence, my dear friend, mon cher ami, President Macron, le président Emmanuel Macron, दोनों देशों के innovators, innovateur des 2 pays, नमस्कार, namaskar, bonjour. bonjour. आज के दिन Nous réunissons दुनिया के aujourd'hui 2 बड़े 2 innovation grands hubs pôles d'innovation du एक साथ monde आ रहे हैं.
जब हम भारत और फ्रांस Et की बात quand on करते हैं parle de l'Inde et de la France, तो हमारा रिश्ता on sait que nos liens इनोवेशन के साथ साथ vont bien au-delà de l'innovation. Nos relations sont aussi shared fondées values का है। sur la confiance et des valeurs partagées. राष्ट्रपति मैक्रो और Et मैंने c'est dans cet esprit que le président Macron et moi-même, nous avons décidé इंडिया de célébrer l'année 2026 comme l'année franco-indienne de l'innovation. ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं Et ce n'est pas seulement une célébration, c'est également un engagement commun, कमिटमेंट un engagement en faveur de l'innovation, कमिटमेंट un engagement à montrer la voie à suivre. Chers amis, भारत और फ्रांस ने l'Inde et la France अनेक स्ट्रेटेजिक ont travaillé ensemble dans de nombreux secteurs technologiques stratégiques. इससे हमारा जो आपसी Et la भरोसा confiance मजबूत हुआ है, mutuelle renforcée qui en a résulté हमारे रिश्तों को nous a permis स्पेशल d'élever ग्लोबल nos स्ट्रेटेजिक relations पार्टनरशिप au के niveau d'un partenariat अहम stratégique पड़ाव तक पहुंचाया है। spécial et mondial. आने वाले समय में Dans les jours à venir, हर सेक्टर में notre हमारी créativité कलेक्टिव क्रिएटिविटी collective dans tous les पूरे secteurs विश्व का nous बेहतर permettra भविष्य d'assurer सुनिश्चित करें। un meilleur avenir pour le Friends, monde entier. Chers amis, भारत अपनी हजारों dans वर्षों son की parcours यात्रा de plusieurs milliers d'années, में मैथ्स l'Inde, मेडिसिन que ce soit les mathématiques, la médecine, और आर्किटेक्चर जैसे अनेक la क्षेत्रों métallurgie, l'architecture, मानव कल्याण l'Inde के लिए a इनोवेट sans करता रहा cesse innové dans और tous अब ces domaines pour le bien-être 21वीं de सदी में l'humanité. भी Et maintenant, au XXIe भारत के siècle युवा également, les innovate jeunes de for l'Inde ग्लोबल गुड progressent की उस rapidement यात्रा पर sur le même तेजी chemin से आगे बढ़ रहे हैं। de innover pour le bien आप देखिए global. भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप Que ce इकोसिस्टम soit dans nos लेकर के startups हमारी world dynamiques class research ou lab dans तक nos laboratoires de recherche एक de नया classe mondiale, कैन डू on ऑप्टिमिज्म voit émerger un nouvel optimisme, une attitude du Startup je India peux le programme faire. से Rien que एक दशक dans में la ही dernière décennie, भारत depuis le lancement दुनिया du का programme तीसरा Startup सबसे India, बड़ा startup l'Inde est ecosystem devenue बन le चुका है। troisième écosystème des startups du 2014 monde. में En 2014, भारत में जहां on avait सिर्फ 4 que यूनिकॉर्न थे 4 licornes en आज Inde. भारत में Aujourd'hui, 120 on से अधिक recense यूनिकॉर्न plus de 120 licornes en इनकी Inde, टोटल वैल्यू dont la valorisation totale 350 बिलियन dépasse 350 milliards de dollars, c'est-à-dire लगभग environ 300 300 बिलियन milliards d'euros. आज दुनिया की Aujourd'hui, करीब हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी Presque toutes les grandes sociétés के technologiques du start-up, monde sont भारत के associées इनोवेशन d'une manière ou d'une autre किसी न किसी रूप avec में des जुड़ी हुई startups indiens ou avec l'innovation indienne. बीते एक दशक Chers amis, pendant la dernière हमने फूलों से décennie, लेकर इंडस्ट्री nous तक avons créé un innovation के écosystème लिए एक favorable pour conducive ecosystem l'innovation, तैयार किया। englobant les écoles स्कूलों में et les industries, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर en créant des tinkering labs mentorship, dans les écoles स्कॉलरशिप et en offrant le mentorat, startup des capital bourses तक et le capital आज एक initial. सशक्त Nous नेटवर्क avons मौजूद créé है। un réseau robuste. आज भारत Aujourd'hui, दुनिया के सबसे l'Inde बड़े est l'un des Hackathon plus grands écosystèmes में से एक écosystèmes है। d'hackathon du monde. यहाँ Ici, प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च nous इनोवेशन offrons स्कीम un के soutien जरिए direct pour la recherche support dans le मिलेगा। secteur privé grâce à Startup notre India programme 2.0 d'innovation. Grâce au programme Deep Tech Startup India इनोवेशन के 2.0, लिए कैपिटल on मोबिलाइजेशन mobilise किया le जा रहा है। capital pour l'innovation Friends, dans le domaine du deep हमारा tech. अटल इनोवेशन Chers मिशन amis, notre Atal आने Innovation वाली Mission 24 फरवरी को achèvera एक le दशक पूरा 24 करेगा février, une और décennie. इतने ही समय Et में dans cette courte période, दुनिया के elle est सबसे बड़े devenue l'une des grassroots plus innovation grandes mission missions में से एक बन d'innovation चुका है। populaire du monde. हमारी 10,000 से ज्यादा Nos टिंकरिंग 10 लैब 000 Tinkering आज Labs
accompagne करोड़ से ज्यादा aujourd'hui student plus de 10 innovators के millions साथ de काम jeunes innovateurs en milieu इस mission से étudiant. Il y a également 100 से plus ज्यादा de 100 incubators incubateurs और कई et deep divers tech startups startups du domaine भी de उसके deep साथ tech जुड़े qui हुए se sont associés à cette mission. मैं आज यहाँ मौजूद Je सभी lance industry un captains से appel भी विशेष aujourd'hui आग्रह करूंगा à tous les capitaines आप de l'industrie présents ici अटल इनोवेशन de मिशन के साथ s'associer जरूर जुड़े sans faute à la Friends, mission Atal विकसित Innovation. भारत की यात्रा Chers को amis, pour इनोवेशन l'Inde, का इंजन चाहिए l'innovation est इसलिए un moteur इस वर्ष के बजट essentiel में भी हमने pour atteindre notre objectif de Innovation Viksit ecosystem Bharat, को une मजबूत Inde करने पर développée. बल Donc, दिया है। dans le budget de cette année aussi, nous Content avons mis creation l'accent को मजबूती sur देने le के लिए renforcement de l'écosystème de 15,000 l'innovation. स्कूलों Pour renforcer le secteur de और création 500 de colleges में contenu, nous allons créer Content creator des labs laboratoires pour la création de contenu AI, dans 15 000 écoles quantum, et dans 500 biotech, collèges universitaires. सेमीकंडक्टर L'Inde travaille और en mode clean energy mission dans les secteurs tels हम que mission l'IA, mode पर le काम कर calcul quantique, la साथ-साथ biotechnologie, les semi-conducteurs हम et textiles, l'énergie propre. chemicals Nous promouvons en même temps sports goods, l'innovation dans tous les precision secteurs, tools, les articles de sport, les electronics, textiles, les produits chimiques, infrastructure les outils de हर précision, sector les में terres rares, les composants innovation électroniques, को promote करें। l'infrastructure. Friends, Chers amis, हमें बहुत गर्व है nous भारत sommes très fiers विमेन लेड रिसर्च और l'Inde इनोवेशन का émerge उज्जवल comme उदाहरण un बन रहा है excellent exemple आज de la लगभग recherche et de l'innovation 50% menée par les startups femmes. में कम से Aujourd'hui, कम environ 50% des women director startups ont au moins une एक बहुत बड़ी directrice संख्या femme. में छात्राएं Les étudiantes STEM graduates sont बन रही हैं। nombreuses parmi les diplômés dans les disciplines STEM. या फिर स्पेस Donc, que ce soit dans l'agriculture ou dans les Women missions are leading spatiales, everywhere. ce sont les femmes Right. qui prennent भारत les के devants इस partout. speed और scale के Chers साथ amis, quand on ajoute à cette vitesse et France à की l'échelle ताकत जुड़ de जाती है, l'Inde les atouts de la तो France, दुनिया के लिए nous créons नए रास्ते de बनते हैं। nouvelles voies à suivre pour आज le भी monde. यहाँ Même दोनों aujourd'hui, देशों के les best minds plus एक साथ brillants esprits de l'Inde et आज de la दोनों France देश sont réunis ici dans cette एक salle. दूसरे के टैलेंट Et les का deux खुले दिल pays से स्वागत accueillent à bras ouverts les France talents ने venus de l'autre. 2030 तक La France 30,000 s'est donné भारतीय l'objectif students का d'accueillir स्वागत करने d'ici का लक्ष्य 2030 30 ये 000 young energy étudiants indiens. और यंग माइंड C'est une excellente तालमेल का एक बेहतरीन initiative pour assurer la Friends, synergie entre les साल jeunes esprits 2026 et pour tirer parti de l'énergie des भारत jeunes. फ्रांस संबंधों Chers के amis, लिए l'année एक 2026 अति विशेष va वर्ष être une année très इसमें particulière pour les relations people to entre l'Inde people et la exchange France. और गहरे Ce होंगे। sera une année pendant laquelle Industry on to va industry approfondir partnership का davantage les échanges entre nos आज हम peuples. जैसे भारत Les में जुटे हैं, partenariats entre les उसी तरह industries vont s'élargir. जून 2026 Et nous faisons des efforts en France Inde, में mais de la même façon, भारत en juin Innovate 2026, 2026 के तहत grâce à Bharat Innovate भारत के बेहतरीन 2026, qui sera tech organisé en startup France, दुनिया के सामने nous रखेंगे। allons pouvoir présenter au monde To les help meilleurs startups indiens climate, dans le domaine de la technologie, security जैसे des startups qui global offrent des solutions challenges pour के les défis समाधान mondiaux tels que la santé, Friends, le climat et la मैं sécurité. Chers और amis, पूरे विश्व के लीडर j'invite les leaders, सीईओ les PDG, इन्वेस्टर les और investisseurs यूनिवर्सिटीज को et आमंत्रित les करता हूं। universités de la France et du monde भारत के entier. साथ मिलकर Venez travailler ऐसा avec भविष्य l'Inde बनाएं pour construire जहाँ un technology avenir où la मानवता की technologie सेवा करे soit au service de और l'humanité प्रगति et où le समावेशी progrès हो। ne laisse इसी personne भाव के de साथ côté. En exprimant आप ce सभी को vœu, बहुत बहुत शुभकामनाएं je हैं tiens à और conclure मेरे et je मित्र का मैं बहुत présente आभारी à हूँ vous tous mes meilleurs जिस vœux. प्रकार से J'exprime उन्होंने समय ma निकाला है reconnaissance à mon और ami. जिस प्रकार Il से a उम्दा vraiment शब्द उन्होंने trouvé कहे le हैं temps et और जो je lui विश्वास remercie प्रकट également किया pour है ses भारत और propos फ्रांस के et pour संबंधों la को लेकर confiance qu'il उनके a लिए exprimée dans एक les अच्छे relations मित्र entre के रूप l'Inde में et la और France. भारत En tant फ्रांस की अच्छी मित्रता के qu'ami रूप et मैं उनका étant बहुत donné बहुत आभार व्यक्त करता हूँ l'amitié entre बहुत बहुत l'Inde et la धन्यवाद France, je lui exprime mes reconnaissances. Merci beaucoup.
Thank you, sir. Merci beaucoup. On behalf of all of us, I would like to Au nom thank His de nous Excellency tous, and j'aimerais Honorable Prime Minister remercier and the son French President Excellence, for sharing le the thoughts and président de la perspectives. France This et will le Premier ministre de l'Inde re-energize our d'avoir efforts. I look partagé at the audience to stay back leur point de vue. while the leaders Je move. demande à vous tous de prendre vos places, de rester pour attendre que les leaders quittent la salle. Merci.